Next article is electric field intensity at the center of uniformly charged wire in the form of circular arc, making an angle phi at the center. तो हमें यहाँ ये एक आर्क है जिसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा, मतलब टोटल चार्ज अगर Q होगा और उसका लेंथ टोटल L होगा तो लैम्डा क्या रहेगा, लैम्डा रहेगा Q/L। ठीक है, यहाँ पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसके लिए नीचे का ज्योमेट्री देखो, मैंने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिमेट्री किया है, मिरर इमेज किया है। ऊपर एक स्मॉल पार्ट लिया dq, स्मॉल चार्ज लिया dq, कितने डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस पे। नीचे भी ये स्मॉल रेड कलर और ग्रीन कलर से दिखाया dx, तो dx इतने लेंथ पे चार्ज कितना है dq, ये डिस्टेंस r हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे p पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ से अगर p पॉइंट पे निकालना है तो टेस्ट चार्ज रख देंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा ये यहाँ से dq से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसे d से दिखाया। और ऐसा ही मिरर इमेज यहाँ पे दिखाया हमने इस ग्रीन वाले से, यहाँ का टेस्ट चार्ज इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर से सिमेट्री है, देखो यहाँ से ये ऊपर आधा नीचे आधा है, तो हम पूरा फील्ड निकालने के लिए वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो पहले हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज dq एट पॉइंट p, इस dq के कारण p पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऊपर का लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये इधर आएगा नीचे इस डायरेक्शन में आया, इसके कारण ऐसा एकदम स्मॉल एलिमेंट है, इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट है। तो हमें किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, 1/4πε0 चार्ज dq, रेडियस r है तो r²। ये बहुत कम है, चार्ज dq बहुत स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम हो गई d। अब हमको क्या करना है, यहाँ को dq को लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लैम्डा क्या है, dq/dx चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dq इक्वल टू क्या मिला, लैम्डा इंटू dx। लेकिन dx भी हमको, dx यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एंगल एकदम स्मॉल एंगल कितना है, d थीटा है, इधर इतने एलिमेंट ने किए हुआ है डायग्राम में, इधर ये d थीटा है। तो एंगल बरोबर r/रेडियस सबको पता है, तो एंगल कितना होगा d थीटा, आर्च कितना होगा dx/r। तो dx की जगह मैं रख सकता हूँ r d थीटा, dx की जगह, तो इधर रख देंगे dq इक्वल टू लैम्डा, dx की जगह r d थीटा। तो यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिलेगा, 1/4πε0, dq की जगह आया लैम्डा r d थीटा/r²। यहाँ पे क्या होगा देखो, r कैंसिल हो गया। अब ये d है, ये d इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज dq ऑन अपर पार्ट dx। Now below part is also mirror image, charge on dx is also dq, therefore this produces electric field along this direction d. Now resolve d into two mutually perpendicular components, one is along y axis de sin theta and another is along x axis or horizontal component de cos theta. Similarly for this d cos theta and d sin theta. d sin theta vertical components are cancelled, d sin theta cancelled, but electric field intensity at p is addition of d cos theta, but not addition of d cos theta means not 2e d cos theta, because this such small element is in upper part at any position and lower part at any position. Therefore total electric field at E is the integration of dE cos theta, but put the limit -5/2 to +5/2. Therefore total electric field at point P is obtained
by integration of dE cos theta. dE cos theta are added and take the limit. Limit is minus 5 by 2 and plus 5 by 2, because small element in upper part is plus 5 by 2, 0 to plus 5 by 2, half angle, and 0 to minus 5 by 2. Put the value of d, 1 by 4 pi epsilon naught equal to lambda d theta by r into cos theta. Take the constant out of the integration, lambda by 4 pi epsilon 0 r. Then integration of minus 5 by 2 to plus 5 by 2 cos theta d theta. Therefore lambda by 4 pi epsilon 0 r. But integration of cos theta d theta is sin theta, and limit is minus 5 by 2 to plus 5 by 2. Therefore E equal to lambda by 4 pi epsilon 0 r sin 5 by 2, put the value of upper limit sin 5 by 2, minus of sin minus 5 by 2. But we know that sin minus theta is taken as minus sin theta. Sin minus of theta is equal to minus sin theta. Therefore E equal to lambda by 4 pi epsilon 0 r sin 5 by 2 minus this, when taken as minus sin theta, the minus minus plus sin 5 by 2. Therefore E equal to, we get lambda by 4 pi epsilon 0 r 2 sin 5 by 2, right? This 2 cancel. Therefore we get lambda by 2 pi epsilon 0 r sin 5 by 2. Therefore equation of electric field at point P is lambda 2 pi epsilon 0 r sin 5 by 2. Or this equation is also written as, this is also known as Ex. E is Ex because Ey components are 0. If we consider same arc is in this form, then in this case electric field intensity is along y-axis and x component are cancelled. Therefore for this net electric field is Ey equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r sin 5 by 2 and Ex equal to 0. But our case is this, and electric field at point P is along x-axis, Ex equal to E equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r sin 5 by 2. Remember total angle is 5, half angle is 5 by 2, total angle is 5. Here also total angle is 5, right? When the axis of arc is along x-axis, then component is often along x-axis. When axis of arc along y-axis, then electric field is along y-axis. Now for uniformly charged semicircle, again this lambda is charge per unit length. Then what is electric field intensity at its center? Electric field intensity at its center of radius r. Now electric field intensity for this case is along this direction, along x-axis, and for this case electric field at its center is along y-axis. Then what is the formula for this electric field? Now in this case angle is phi, then for a semicircle angle is phi equal to pi, and again here in this case angle is pi. Therefore put the value of pi in general equation,
In this case we get Ex equal to lambda. In this case we get Ex equal to lambda 2 pi epsilon 0 r sine pi by 2. Sine pi by 2 1. Therefore Ex equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r. Ey component that cancel, Ey equal to 0. For this case same, but only electric field at center P is Ey equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r and Ex equal to 0. It is similar to electric field intensity due to uniformly charged wire at distance r. Due to this lambda, equation is lambda by 2 pi epsilon 0 r. Same equation is obtained for semicircle, right? Now sometimes given the total charge on the semicircle, suppose total charge is q, then put lambda equal to q by l. L semicircle length is pi r, therefore put lambda equal to q by r. Therefore E equal to, in general formula, E equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r, right? X component or y component. In this case we get x component, in this case y component. General equation is E, general is represented by E, lambda by 2 pi epsilon 0 r. Put lambda equal to q by pi r, then we get q by 2 pi square epsilon 0 r square, and this gives the equation of electric field for semicircle, right? ये semicircle है, हाँ सॉरी, देखो ये semicircle है, हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज semicircle है, और इसका पोटेंशियल पूछता है इस पॉइंट का, यूनिफॉर्मली चार्ज पोटेंशियल पूछेगा तो हमको क्या फार्मूला है, टोटल चार्ज क्यू है, तो V इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, टोटल चार्ज क्यू बाय आर, सबका डिस्टेंस आर ही रहेगा। टोटल चार्ज क्यू की जगह रखो तुम लैम्डा इंटू पाई आर बाय आर, पाई पाई कैंसिल, आर कैंसिल, तो पोटेंशियल आएगा लैम्डा बाय कितना 4 एप्सिलॉन नॉट एट पॉइंट पी का पोटेंशियल। देन this is uniformly charged. Then what is the electric field at point P? Angle phi becomes phi by 2. Get lambda by 2 root 2 pi epsilon 0 r, the electric intensity at point P due to quarter circle. Electric field intensity at the center of closed ring, uniformly charged ring. Then what is the electric field at the center? Without formula, electric field intensity is 0 because each component is cancelled opposite field. Suppose this plus field produces along this direction, this plus field produces electric field, and this plus produces this, the net electric field is 0. But by equation E equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r sin phi by 2. For complete circle, phi total angle is a 2 pi. Center angle is becomes 2 pi. This angle becomes whole angle is a 2 pi. Therefore phi equal to 2 pi. Then lambda by 2 pi epsilon 0 r sin 2 pi by 2. Then lambda by 2 pi epsilon 0 r sin pi is 0. Therefore electric field due to uniformly charged ring, electric field at the center of uniformly charged ring is 0.